Hello everyone, welcome back to my channel Kejalbiosphere. In the last video, we studied about one of the life processes, that is nutrition. Today we'll be studying about respiration. I hope you all have seen the video and subscribed to the channel. If you have any comment or any doubt or any suggestion that which topic I should be covering, please put them in the comment section below. Thank you so much. So let's start with a new process today, that is respiration. Now let us first understand what is the definition of respiration. The process in which the cells of the organism performs oxidation of glucose. If you remember, nutrition में हमने खाना digest किया था and the glucose from the carbohydrates was sent to each and every cell. अब ये ग्लूकोज को हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे, that is react with the oxygen, and it will produce energy for you, and that energy will be in the form of ATP. Okay, yes, let me make it very clear. Respiration is not breathing, it is energy production. This respiration is classified into two phases. The first phase is the energy production in the cell, that is cellular respiration. It causes the release of energy in the cells. That is the reason it is called cellular respiration. And the second phase is ये energy production के लिए आपको चाहिए oxygen, and this oxygen will be brought to you by breathing. So inhalation of oxygen and exhalation of carbon dioxide is the second phase of respiration. Yes, breathing is a part of respiration, and respiration and breathing are not one and the same. Okay. Now what happens to this glucose in the cells? Glucose, which is a 6-carbon molecule, that is C6H12O6. This glucose is broken down into a 3-carbon molecule called pyruvate. Okay, energy production के लिए आपका glucose 6-carbon molecule is broken down into pyruvate, which is a 3-carbon molecule, and along with this it will also produce energy, and this is occurring in your cytoplasm. Okay, ये process glucose to pyruvate का आपके cytoplasm में होगा. Now ATP is nothing but adenosine triphosphate, and ATP is the energy currency of your cell. अगर आपके बॉडी में आपको कुछ भी काम परफॉर्म करना है तो आपको चाहिए ATP. So that is why ATP production is very, very crucial. Now this ATP production occurs in two ways. First is aerobic respiration. नाम से पता चलता है aerobic मतलब it will need air. And second one is anaerobic respiration, that is it will occur in absence of air. So aerobic respiration, that is energy or ATP production in the presence of oxygen, or organisms can go for anaerobic respiration, that is energy production in the absence of oxygen. So every organism has a different method. हम लोग aerobic respiration perform करते हैं. अगर हम कुछ microbes की बात करें तो वो anaerobic respiration perform करते हैं. Now let us see how does this aerobic anaerobic play the role in different organism. The basic process remains the same. जो बेसिक तुम्हारा प्रोसेस है ग्लूकोज टू पायरुवेट का, वो सेम रहता है. उसके बाद अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग स्टेप फॉलो होंगे. सो हियर वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ 3 सच प्लेसेस. द फर्स्ट वन, in the absence of oxygen, completely oxygen को use नहीं करेंगे. This is done in the organism called yeast. You might have heard about yeast. So it respires, produces energy in the absence of oxygen. Now let me tell you one thing, हमेशा ATP के साथ साथ कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं. तो अलग अलग पाथवे में अलग अलग बाई प्रोडक्ट बनेगा. जैसे कि ईस्ट में along with energy आपको मिलेगा ethanol and carbon dioxide. Carbon dioxide we all know. Ethanol is a type of an alcohol, that is C2H5OH. मतलब आपको एक 2 carbon molecule मिलेगा यहाँ पे. Okay, so this is first pathway. Second pathway is in the lack of oxygen.
ठीक है, मतलब ऑक्सीजन बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं है, कम अमाउंट में है। तो कैसे काम करेगा मेरा सेल और कहाँ पे होगा ये? इट विल अकर इन योर मसल सेल्स। नाउ यूजुअली व्हेन यू डू एक्सरसाइज दैट टाइम, कभी कभी ऑक्सीजन कम पड़ जाता है बॉडी में, तो आपके मसल सेल्स लैक ऑफ ऑक्सीजन में एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं। तो तभी आपको एटीपी मिलेगा, बट अलोंग विथ एटीपी यू विल गेट the byproduct lactic acid. Okay, and actually this lactic acid gets accumulated in your muscle cells, और आप एक्सपीरियंस करते हो कि रिगरस एक्सरसाइज के बाद आपको मसल में एक होता है, सोरिंग हो जाती है मसल्स की। सो दैट सोरिंग ऑफ द मसल इज बिकॉज ऑफ दिस लैक्टिक एसिड. So this pathway is in the lack of oxygen, and the last pathway is in the presence of oxygen. आराम से बहुत सारा ऑक्सीजन अवेलेबल है मेरे पास, और ये प्रोसेस कहां पे होगा? तो मेरे माइटोकॉन्ड्रिया में. You have heard, right? Mitochondria is the powerhouse of the cell because mitochondria produces the maximum amount of energy. So along with energy in the mitochondria, you will get water, H2O, and carbon dioxide. This is the pathway which takes place in our body in normal conditions. Okay, so this is how we saw aerobic and anaerobic respiration. Now, since the aerobic respiration pathway depends on oxygen, very obviously oxygen के बिना ये pathway काम करेगा नहीं. So aerobic organism जितने भी है, they need to ensure, they have to make sure that उनके पास proper amount में, sufficient quantity में oxygen available हो. So animals have evolved different organs for the uptake of oxygen. अब अलग organism में अलग organ use होता है oxygen एटमॉस्फेयर से ग्रास्प करने के लिए. जैसे कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स रेस्पायर थ्रू लंग्स. सिंपल एग्जांपल हमारा ले लेते हैं. ओके, वी आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड वी टेक इन ऑक्सीजन इन आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ द लंग्स. बट इन द सेम प्लेस इफ वी टॉक अबाउट फिशेस, they respire through gills. They have gills present on their body and वहां से they obtain oxygen. So अलग organism का अलग organ है oxygen के uptake के लिए. Now let's talk about fish in a little depth. Now fish take in water through their mouth. अब ये जो आपके फिशेस होते हैं, इनको ऑक्सीजन पानी से मिलता है. दे टेक इन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन. उन लोग हवा में आके ऑक्सीजन को ब्रीद नहीं करने वाले. तो अब इन लोग कैसे काम करते हैं? दे टेक इन वाटर, जो वाटर में ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट है. ठीक है, सो फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ. उसके बाद वो पानी में ऑक्सीजन भी होगा. They force it past the gills where the dissolved oxygen is taken up by blood. Through the mouth, the water with the oxygen is taken inside the body, and now this water along with the oxygen is pushed over the gills. ओके, यहाँ पे गिल्स में वो पानी को फोर्स करेंगे और गिल्स क्या करेगा? पानी से ऑक्सीजन को ले लेगा और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में दे देगा. और फिर जब फिशेस के गिल्स से पानी बाहर निकलता है तो वो कार्बोनेटेड वाटर होता है. So this is how fishes do the breathing. Now, fishes breathe in oxygen that is dissolved in water. But now the problem over here is the amount of dissolved oxygen is low in the water as compared to air. पानी में ऑक्सीजन बहुत कम होता है, एयर में काफी ज्यादा होता है. ओके, तो इसकी वजह से the rate of breathing in aquatic organisms is much faster than that seen in terrestrial organisms. सिंपल सी बात है, अगर एयर में ऑक्सीजन ज्यादा है तो मुझे फटाफट ब्रीद करने की जरूरत नहीं है, और पानी में ऑक्सीजन कम है, इसीलिए फिशेस को रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ाना पड़ता है. आई गिव एन एग्जाम्पल. मतलब अगर एयर में मैं एक ब्रेथ में 5 मॉलिक्यूल लेती हूँ ऑक्सीजन के, तो वही जगह पे पानी में इफ आई ब्रीद इन वंस आई विल गेट ओनली 1 मॉलिक्यूल. सो यू अंडरस्टैंड, जो एयर में मैंने एक ब्रीद किया उसकी जगह पे पानी में मुझे 5 बार करना पड़ेगा. सो दैट इज द रीजन आप नोटिस करोगे दैट फिशेस, they are constantly opening their mouth so as to take in the
water which has dissolved oxygen. Now let's talk about the human respiratory system कि हमारी बॉडी में ये ऑक्सीजन हमारे सेल तक कैसे पहुंचता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है, उसके पहले हम लोग पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिटेल में देख लेंगे. सबसे पहले यू हैव योर नेजल पैसेज और जिसको हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स. ओके, आफ्टर द नॉस्ट्रिल्स यू हैव योर माउथ कैविटी. ओके, कैविटी एंड ओपनिंग और एन ओपन स्पेस. उसके बाद आता है आपका फैरिंग्स. ओके, व्हाट इज फैरिंग्स? फैरिंग्स इज बेसिकली द कॉमन पैसेज. ओके, कॉमन पैसेज जहां से आपका फूड पाइप एंड विंड पाइप सेपरेट होता है. ठीक है, तो आपका ट्रकिया और आपका ईसोफेगस विल सेपरेट आउट. तो वो जो कॉमन पैसेज है दैट इज योर फैरिंग्स. फैरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स. लैरिंग्स इज नथिंग बट योर वॉइस बॉक्स which will help in producing voice for you. After that, you have the trachea. Trachea is nothing but your windpipe, the pipe through which the air will be transported in your body. Okay. Now, this trachea is surrounded by rings of cartilage. Normally, अगर आपका trachea ऐसे ही अकेला present होता तो it might collapse. Okay. तो उसको सपोर्ट के लिए आपके पास है रिंग्स बने होते हैं ऐसे कार्टिलेज के. बोन नहीं है बट कार्टिलेज है सपोर्ट के लिए. उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, योर विंड पाइप और ट्रकिया डिवाइड्स इनटू टू ब्रांचेस एंड दीज टू ब्रांचेस आर कॉल्ड ब्रोंकाई. Okay, these two branches are called bronchi and these two branches further divide and subdivide into branches called bronchioles. Okay, it's just imagine like a ulta tree कि आपका ये trachea, उसके दो bronchi और उसमें से निकलने वाले बहुत सारे bronchioles. And very crucial is every bronchiole के end पे होता है alveolar sac. Okay, a balloon like structure, alveoli. This alveoli is very very important in the exchange of gases in your body. Okay, we'll be studying about it in detail, don't worry. And this entire thing is called as your lungs, and lungs are protected by a bony cage called ribs. Okay, and finally आपके lungs के नीचे there is a sheet like structure called diaphragm. ये diaphragm भी बहुत important है respiration के लिए. हम देखेंगे उसका function क्या है आगे के slides में. So now let us understand how is the oxygen flow or the air flow happening in your body. In human beings, air is taken into the body through the nostrils. Okay, आपका जो nasal passage है वहां से हम air को breathe in करेंगे. उसके बाद the air passing through the nostrils is filtered by the fine hair lined in the passage. So let me tell you, the hair present in your nose is very important because जब आप breathe in करते हो air, उसमें बहुत सारा dust होता है, particle होता है, तो ये fine hair उस air को filter करता है. And साथ ही साथ along with the hair, the passage is also lined with mucus. Okay, there is a slimy substance in your nose called mucus. That is also important because ये जो dust है वो वहां पे trap हो जाएगा. Okay, and the air will become moist and warm. And now this air will go ahead in your windpipe. Okay, so ऐसे आपके नोज के थ्रू आगे थ्रोट में एंड फिर थ्रोट के थ्रू आपके लंग्स में. द एयर पासेस थ्रू द थ्रोट एंड इनटू द लंग्स. ओके, rings of cartilage are present in the throat. We already know this, so that the air passage or your trachea doesn't collapse. Okay, so rings of cartilage very important. In the lungs, the passage divides into smaller and smaller tubes, which finally terminate in a balloon-like structures, which are called alveoli. So that's what I told you, that you have bronchi, and bronchi will further divide and subdivide into bronchioles, and then you will have
alveoli. This is alveoli. The walls of the alveoli contain an extensive network of blood vessels. Okay, blood vessels, your capillaries, arteries, veins. Okay, so these fine capillaries are present around the alveoli. अगर आपको याद है आपके बॉडी में कुछ भी ट्रांसपोर्ट करवाना है तो ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करवाता है. जैसे कि खाना ब्लड ने ट्रांसपोर्ट किया तो अभी ऑक्सीजन भी तुम्हारा ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करेगा. तो ये एयर आपके एल्वियोलाई से आपके ब्लड में पास ऑन होगा. Okay, see how richly they are supplied with the capillaries. Okay, so when we breathe in, we lift our ribs and flatten our diaphragm. Now you'll get to know why diaphragm is important. So आपको पता है जब भी आप breathe in करते हो, your ribs lift. Okay, your chest will fluff up, it will pop out. And if you see, this is the diaphragm. Okay, see जब भी आप breathe in करते हो पूरा लंग्स एयर से फिल हो जाएगा एंड आपका डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा. ओके, द चेस्ट कैविटी, ओके, द कैविटी, द स्पेस becomes larger as a result, and because of this the air is sucked into the lungs. अभी ये कैविटी एक्सपैंड होता है तो एयर फिल हो जाएगा एंड एयर फिल हुआ मतलब सारा एयर, ऑल द एयर विल गो इनटू योर एक्सपैंडेड alveoli. ओके, Now exchange of gases through the alveoli. अभी air alveoli में आ गया है, but understand, I don't need the entire air. I just need the oxygen from the air. So now, very crucial part. That's my one alveolus. Okay, एक है इसीलिए alveolus बोल रही हूँ, बहुत होते तो alveoli बोलती थी. So it's singular, plural. Okay, and this is my blood capillary. ब्लड कैपिलरी, इसके अंदर से ब्लड फ्लो हो रहा है. सो अब क्या होगा, आपका ये जो एल्वियोलस है यहां से उसके अंदर से ऑक्सीजन विल कम इनटू द ब्लड कैपिलरी एंड ब्लड कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड विल गो इनटू द एल्वियोलस. दिस इज डन बाय सिंपल डिफ्यूजन. ओके, ये काफी हद तक सेमी परमिएबल होते हैं. दैट इज द रीजन कि उन लोग ये गैसेस का एक्सचेंज कर सकते हैं. ओके, और ऐसे करके आपके ब्लड में ऑक्सीजन आ जाएगा. Now respiratory pigments take up oxygen from the air in the lungs and carry it to tissues. Respiratory pigment, pigment मतलब something which has color. Respiratory मतलब it is associated with respiration. तो अब क्या है, आपका जो ब्लड होता है उसमें there are RBCs, red blood corpuscle. Okay, so this RBCs, they have a red color pigment called hemoglobin. Okay, so this hemoglobin is the respiratory pigment for human beings. तो आपका जो RBC ब्लड में यहाँ पे फ्लो करता है तो उस RBC का जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा खुद में और फिर उसको लेके जाएगा टू ईच एंड एवरी सेल wherever it is required. Okay, so you need to remember that hemoglobin is the respiratory pigment which is red in color, which will absorb oxygen and help in transportation of that oxygen. And this is how we transport the oxygen, and that is how we perform respiration in our body. Okay, here we are done with respiration in humans. Now we'll quickly have a glance on respiration in plants. This is very simple. It's not in detail like your animals because plants are sedentary organism. They don't have high energy requirement. अगर energy requirement high नहीं है तो ऑक्सीजन भी काफी कम यूज होगा. ठीक है, और आपके प्लांट के पास रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गन, ऐसा कुछ भी नहीं है. ओके, so we have studied about the exchange of gases taking place during photosynthesis. हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. लीफ के ऊपर स्टोमाटा होता है. ओके, स्टोमाटाज आर प्रेजेंट ऑन द लीफ एंड जो स्टेम होता है उसके ऊपर देयर आर सेल्स कॉल्ड एज लेंटिसेल्स. ओके, सो व्हाट हैपेंस इज दीज सेल्स विल help in exchanging the gases. But normally photosynthesis में carbon dioxide is taken up and oxygen is given out.
बट रेस्पिरेशन में कैसे होता है? ऑक्सीजन इज टेकन इन. सो ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन अकर साइमल्टेनियसली. दिन के टाइम सनलाइट है तो वेरी श्योर फोटोसिंथेसिस होने ही वाला है. तो फोटोसिंथेसिस के साथ साथ रेस्पिरेशन होता है. मैंने आपको बताया प्लांट की एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत कम है, तो रेस्पिरेशन भी उतना ग्रैंड लेवल पे करने की जरूरत नहीं है. सो व्हाट हैपेंस इज फोटोसिंथेसिस होगा. फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड एंड ऑक्सीजन इज गिवन आउट. दिस इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग डे टाइम. अब ये जो ऑक्सीजन रिलीज किया है, some amount of it will be used by the plant's mitochondria. ओके, प्लांट का माइटोकॉन्ड्रिया खुद उस ऑक्सीजन को यूज करेगा रेस्पिरेशन के लिए, और बाकी का बचा हुआ इट विल गिव आउट इन द एटमॉस्फेयर. ठीक है, और इस रेस्पिरेशन से जो CO2 निकलता है, इट विल बी अगेन इनकॉर्पोरेटेड इन द साइकिल ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो दिस इज व्हाट हैपेंस कि फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन साइमल्टेनियसली साथ में परफॉर्म होते हैं दिन के टाइम में. ओके, तो प्लांट को एक्सटर्नली ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की जरूरत पड़ती नहीं है. बट अब हम बात करते हैं ड्यूरिंग नाइट टाइम. अब फोटोसिंथेसिस तो नहीं होने वाला रात के टाइम पे बिकॉज सन नहीं है, तो अब होगा सिर्फ रेस्पिरेशन. And now your plant will take in oxygen and give out carbon dioxide. That is the reason we hear people saying that रात के टाइम पे plants के नियर बाय नहीं जाना चाहिए, बिकॉज वहां पे ऑक्सीजन कम होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है. बिकॉज ड्यूरिंग नाइट CO2 elimination is on higher level than oxygen. Okay, so here we finish with your respiration in human and plants both. Thank you so much for hearing me out. If you have any doubts, any suggestion, if you want me to cover any specific topic, please let me know in the comment box below, and subscribe to my channel Kejalbiosphere. Okay, and please share it with all your friends possible, whoever you feel it will be useful to. Thank you so much.